अब हम बात करेंगे आज एक्सेलरेटिंग कंटेनर का। लिक्विड स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Yes, sir. ठीक है, तो it's in a non-inertial sort of frame. So let's say there's a container और ये कंटेनर इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो what happens, the liquid surface reorients itself. Yes. लिक्विड का सरफेस जो होता है वो अपने आप को रीओरिएंट कर लेता है because there is a pseudo force acting if I look it at from the non-inertial frame. Yes, sir. Fine. So if I take 2 points, let's say A and B. पहले क्या होता था, A और B पॉइंट का प्रेशर सेम रहता था। Yes, sir. When the liquid was stationary and the container was stationary. Yes. तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये वाला हाइट यहाँ से h1 हो गया और ये वाला हाइट यहाँ से h2 हो गया। Yes, sir. And let's say the length of distance between point A and B is L. So I can say here, applying Newton's second law, that this is accelerating in this direction from inertial frame. Yes, there is a force acting PB into area from this side, PA into area from this side. Yes, sir. DA लिख सकते हैं, small area, and the mass of this is area into length, volume into density of liquid. Right. This will give me M. So I can, using Newton's second law, using second laws of Newton, I can write PA into A minus PB into A is mass AL rho into A, mass into acceleration. Yes. So what I'll get here, Gurashish, is PA minus PB is L rho A. ये पहला इक्वेशन हो गया। Also from figure, I can say that PA is rho H1G, ठीक है, and PB is equal to rho H2G. So PA minus PB is actually rho H1 minus H2G. So इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब rho H1 minus H2G is equal to L rho A. So rho gets cancelled out. And we have H1 minus H2 upon L is A by G. So what is H1 minus H2? So this is H1 minus H2. That is the difference in liquid column at the 2 point, equal to tan theta. Slope of, यदि मैं आपको इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम से समझाऊं, कि यदि मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को लेता हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस पे एक स्यूडो फोर्स इधर की तरफ M into A एक्ट करेगा। So it will have a tendency to accumulate at the other end. इधर की तरफ यदि जा रहा है, इस पे स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लगा, तो ये इस तरह से accumulate कर लेगा, एक स्टेशनरी कंडीशन क्रिएट करेगा। इक्विलिब्रियम में तो पहुंचेगा ही, क्योंकि कंटेनर से बाहर तो नहीं निकल रहा है। यदि आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर देंगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये कंटेनर से बाहर भी निकल जाएगा, ये इधर से बाहर निकलने लगेगा। If you keep on accelerating, increasing the acceleration. Okay. Understood? Right. Yes. ठीक है, तो the questions will be like in this situation, बहुत ही easy questions आ रहे होंगे, but the important point is here is कि H1 minus H2 आपको पता करना है, that is the height difference. Suppose if I say what is the pressure difference, एक कंटेनर मैंने ले लिया, ठीक है, और ये कंटेनर इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमें पता है इस तरह से हो जाएगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि A पॉइंट और B पॉइंट है, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PB, तो आप लिखेंगे प्रेशर डिफरेंस इज रो G H1 माइनस H2। यदि ये पॉइंट H1 है, ये पॉइंट H2 है, तो आप रो G रो A by L by G भी लिख सकते हैं। Yes. ठीक है, so G gets cancelled out, रो A L हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस को एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, एक इजी क्वेश्चन था, कंटेनर contains liquid
to a height L. The base of container is of length 2L. There is a small hole Yes, in the container at the center of bottom surface. Okay. What should be the acceleration of container? Acceleration of container so that water does not flow out through hole. और कंटेनर का हाइट जो है बहुत बड़ा, हाइट इज sufficient to prevent any flow. इतना बड़ा है कि कितना भी आप एक्सेलरेट कर दीजिए ऊपर से पानी नहीं नीचे जाएगा. Only possibility is going through the hole. समझ में क्वेश्चन आया? हाँ, right. बहुत इजी सा क्वेश्चन. tan theta is a by g लिख सकते हैं, और मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस ऐसे ओरिएंट हो जाना चाहिए. दिस शुड बी द एंगल थीटा. ठीक है, tan थीटा a by ये हो जाएगा. और आपको एक्सेलरेशन पता करना है. एक्सेलरेशन के लिए आपको g tan theta, sorry, a is equal to g tan theta, but you don't know the angle. So how to find out the angle? So एंगल पता करने के लिए मुझे ये L by L. एंगल के लिए ये हाइट पता होनी चाहिए. लेकिन मैंने बोला था कि कंटेनर में पानी इस तरह से है, L हाइट तक है. राइट. एक्सेलरेट करने लगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, like this. So this is the height h I am talking about. Okay. So I have to find out that height. So I can say that volume remains, volume of water is constant. Volume of water is constant. So I can say that 2L into L. I'm just equating the area. In दूसरे side तो same dimension होगा. Let's say this is of dimension B. ठीक है, इस साइड का डायमेंशन मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो दोनों के लिए सेम होगा. और इधर की तरफ मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू h इंटू L. So I get h as 4 times L. Yes, sir. ठीक है, तो tan theta is like कितना हो जाएगा? 4L by L हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा. So A is equal to 4 times G.